Very good evening to all of you. Is this audible, visible, all clear? Such samastangu. Good evening, Anju, Varsha, Pihu, everyone join. Join kale samaste. Okay. आज गोटे बढ़िया टॉपिक अच्छी डिस्कस करिया पई फाइनेंशियल इंक्लूजन, माइक्रो फाइनेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ हला आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन होची इंक्लूसिव ग्रोथ माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक भी कहबी फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कहबी प्लस सबुठ इंपोर्टेंट हैला कोन ना इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ रो अर्थ कोन कि कहि पर व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ नमस्कार गिरिजा इंक्लूसिव ग्रोथ कहला हमें सिंपली कौन बुझे ना व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ ग्रोथ रो अर्थ कौन थला ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कांसेप्ट ग्रोथ व्हाट इज दिस इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कांसेप्ट दिस इज अ क्वांटिटेटिव कांसेप्ट ये कहला व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ फॉर ऑल कहा पाई ना ग्रोथ फॉर ऑल especially when we talk about the marginalized section of society when we talk about the marginalized section of society that कोच कौन ना inclusive growth including everyone in the growth model कौन कहली including everyone in the growth model is inclusive growth including everyone in the growth model is called inclusive growth बुझेला what is inclusive growth सिंपल कथा आसीबी मु इंक्लूसिव ग्रोथ ऊपर आउरी अनेक डिस्कशन अछि बहुत पॉइंट अछि डिस्कस करिवि बट ता पूर्व किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया फर्स्ट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया कांसेप्चुअल एनालिसिस इन द मीन टाइम आसीजु फर्स्ट क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया's डेवलपमेंट स्ट्रेटजी व्हाट बेस्ट कैप्चर्स द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ ए increasing government subsidy to all citizens irrespective of income level b focusing only on rural development to reduce poverty C. Maximizing GDP growth regardless of distributional outcomes. D. Ensuring that growth generates productive employment and benefits all sections, especially the poor and the vulnerable. What is the correct answer? A, B, C, D bitaru. What is the correct answer which best describes the idea of growth? Inclusive growth. Which best describes the idea of inclusive growth? Samaste kahibe. समस्त कहबे all so inclusive growth means including everyone productive employment benefit for all the sections especially poor and vulnerables included ताको कहला हम कोन ना inclusive growth clear so option D is the correct answer option D is the correct answer हैला बुझे गला समस्त डाउट नेक्स्ट आसीबा क्वेश्चन नंबर 2 question number 2 in the context of India which option best captures the idea of inclusive growth as envisaged in recent 5-year plan and Niti Aayog strategy same type of question खाली नीति आयोग स्ट्रेटजी और 5-year प्लान ने जोटा आसला इंक्लूसिव ग्रोथ कुछ व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ सिंपल क्वेश्चन व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ एज पर नीति आयोग एजेंडा और लेटेस्ट 5-year प्लानिंग्स प्रथम क्वेश्चन ऑप्शन गुडा को पढंतु मन देई पढाग मन देई कोन से कहूची ensuring growth that creates productive job reduces poverty narrows inequality across region and social groups focusing primarily on export led growth
providing periodic cash transfer, achieving high GDP growth. Which is true? कौन हम आंसर? गिरिजा ए, अंजू ए, समस्ते पीहू ए, समस्ते ए, ऑल ए. आउ किछि आंसर अछि बी सी डी? आउ किछि अलगा आंसर अछि? आउ किछि अलगा आंसर अछि और ओनली ए? Only A. Okay, so A कौन कहती है? कहती है ensuring growth that creates productive job. Absolutely correct. Which reduces poverty, narrows inequality across regions and social group. Correct. So A is the correct answer. कौन कहले एटी? What is the answer? A is the correct answer. Second option देखला focusing on export led growth. No, only export कथा कहती ना. That's why B is not correct. C, providing periodic cash transfer to the poor. No, wow, why? Periodic cash transfer कहीं करिए. Achieving high GDP growth, even if benefits are concentrated in urban areas. A is the correct answer. Next question. Question number 3. Next question number 3. Which of the following best describes financial inclusion as used in official Indian policy document? Which of the following best describes financial inclusion as used in official Indian policy document? फाइनेंशियल इंक्लूजन कौन? पढ़ पढ़िले ठीक है आंसर. आगे चारटा तक ऑप्शन को भलरे पढ़ंतु. चारिटा तक ऑप्शन को पढ़ंतु भलरे. बहुत सिंपल. ऑप्शन पढ़िले आंसर ठीक है जो. मतलब सब जगह ठीक लगुच नहीं. सब ठीक नहीं. सब जगह पढ़. 3 नंबर देखला कुछ प्रोवाइडिंग क्रेडिट ओनली टू लार्ज कॉर्पोरेट. केवल लार्ज कॉर्पोरेट मानक दबो कहितले जोटी ए भलिया डेंजरस वर्ड आकु कहे ओनली, ऑल, हैला, ऑलमोस्ट, नन ए भलिया वर्ड थिले को डेंजरस वर्ड पन से स्टेटमेंट को 3-4 थर एग्जामिन करिवे. सो ओनली टू लार्ज कॉर्पोरेट खाली टाटा बिरला को दबो आउ का को लोन दबो. इज दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन? खाली टाटा बिरला को दबो आउ का को दबो. इज दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन? आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहवा कि? नो. जो ओनली पोर ही था ताले कौन हम आंसर? The answer is ensuring access to useful and affordable financial products and services for all individuals and business, especially the vulnerable, in a responsible and sustainable manner. What is the answer here? The correct answer is B. What answer? The correct answer is B. Hela? B is the correct. Now explanation didi che answer didi sabu dei che dekho. Answer, this is the answer or explanation. B is the correct answer. Next. Question number 4. Which of the following is not a key objective of financial inclusion? Question कहूची which is not
a key objective of financial inclusion not ଦେଇଛି not ଦେଇଛି ଏଠି କଣ ହବ reducing dependence on informal source of credit, promoting savings and investment among poor, ensuring that every household owns credit card, enhancing access to insurance and pension products. Which is not objective of financial inclusion. आ भितर कोटा financial inclusion objective नुहे. Dependence on informal source. Now informal source के like money lender, साहूकार, जमींदार एमान को पैसा न बनी. Promoting savings, yes, promote करियो savings. Ensuring that every household owns credit card, yes. So ensure every household owns credit card. एटा हबनी. Credit card दबाटा की प्रकार financial inclusion. Now this is a luxury. आगे नहीं. Credit card मिलले कौन हबो? Credit card रो use अधिक होइल, that is a luxury. Next question number 5. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is primarily associated with shopping paying, yes. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is associated with providing subsidized housing, financial inclusion through universal access to banking, offering interest-free loans to MSME, expanding network of cooperative banks. कौन हबो? Promoting financial inclusion through universal access to banking. ठीक अछि? B is the correct answer. Next, which of the following is the major challenge to financial inclusion in rural India? Major challenge to financial inclusion in rural India. Financial inclusion कौन पाई हेई पारुनी कोठी ना rural India रे. See, lack of banking infrastructure and low financial literacy. Okay. The lack of banking infrastructure and low financial literacy. Now, what is high level of digital literacy? Now, high level of digital literacy, this is an advantage. Over banking, excess competition among banks. Now, it is over banking, financial inclusion not required. High income level and low demand for credit. Wrong. Income level high nahi ki credit demand for credit is more. अधिक लोगों को अधिक लोन रो आवश्यकता अछि.
The concept of last mile connectivity in financial inclusion refers to what is last mile connectivity? Last mile connectivity refers to connecting all banks to SWIFT network, ensuring that financial services reach the remotest and poorest section of society, linking all ATM to single national network, providing internet banking to all urban households. Last mile connectivity is called what is last mile connectivity? ସମସ୍ତେ participate କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। लास्ट माइल कनेक्टिविटी मीन समस्तଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ reachability कौन कहली reachability more ensuring that financial services reach remotest and poorest section of society कौन कहली it should reach the remotest and poorest section of society ହେଲା हाँ कि नहीं इटा तो B is the correct answer last mile technology which of the following is correct feature of business correspondent जाको BC कहा जाए business correspondent बा BC मानकर कौन काम correct feature today questions are easy ना financial inclusion ଆଉ inclusive growth topic टा ही easy एथरे मेंस रो easy question आसे प्रीलिम्स रो भी easy question आसे ये टॉपिक टा इजी अछि हैला they provide basic banking services in unbanked area नहीं they provide basic banking service in unbanked area jam trinity in the context of financial inclusion refers to something like that what is jam trinity means tridev जेमति पढनो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सेमति trinity means tridev इटी त्रिदेव बोली कहा को कहा जाए ए कॉन्टेक्स्ट रे मेक इन इंडिया कौन जानिथिले एटा बहुत जण भूल करिवे जोने मेक इन इंडिया करूचंदी रॉन्ग आंसर जनधन आधार मेक इन इंडिया सहित इन व्हिच वे इट इज कनेक्टेड is it connected in any way no they are not connected in any way they are not connected in any way no problem don't be sorry pio भूल एठी हो आउ कोठी ना हो मनरेगा काहे कि मनरेगा मते कोंतु मनरेगा रो फाइनेंशियल इंक्लूजन सहित कोन संपर्क सिंपल क्वेश्चन जनधन योजना अकाउंट आधार कार्ड नंबर एंड मोबाइल नंबर सिंपल एटा हम बहुत थर कहि पढेला फाइनेंशियल इंक्लूजन जाम जनधन अकाउंट आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर ई तीनटा कनेक्टेड नुए मोबाइल नंबर राइट परीक्षा रे हो कोठी हो माने वर्षा एटी भूल हो जते होछ मो कहबार उद्देश्य परीक्षा रे ठीक हो ना नहीं ना उल्टा दरकार तुम को ना उल्टा दरकार को वर्षा
मो कहया कथा एठी भूल हो प्रैक्टिस सेशन ने घरे प्रैक्टिस कला बेले परीक्षा रे ठीक हो बस एठी हमें आसुचे भूल करिया पई भूल को ठीक करिया पई आ से ठीक को परीक्षा रे इंप्लीमेंट करिया पई एति के हमर ऑब्जेक्टिव ना से कहजो एग्जाम रे राइट हो चला एटा हे गला which of the following is key benefit of DBT direct benefit transfer in the context of inclusive growth देखो क्वेश्चन को अंडरमाइन कलो पहले क्वेश्चन सहज अछि भूले गला तापर कहलो सर सहज क्वेश्चन अछि আজি तापर सहज और टेक्निकल क्वेश्चन पळे आसले आंसर भूले गला एबे देखियो आ गोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन अछि के ठीक करछि DBT in the context of inclusive growth means कोन हबो intended benefits reduces leakage and ensures benefit to reach intended beneficiaries okay which of the following scheme is specifically aimed at providing collateral free credit to micro enterprises collateral free credit मुद्रा योजना तो मुद्रा रे केतरा स्कीम थिला मुद्रा रे कौन कौन स्कीम थिला कि कहि परिबे मुद्रा रे स्कीम कौन कौन थिला लोन जो थिला लोन अमाउंट अनुसार कौन कौन थिला स्कीम शिशु किशोर तरुण नुहे कौन थिला स्कीम स्कीम थिला शिशु किशोर आउ तरुण स्कीम बोला नेक्स्ट क्वेश्चन in the context of inclusive growth trickle down theory is often criticized because no आसीगला डिफिकल्ट क्वेश्चन ना इटा भी सहज अछि देखो छोटो क्वेश्चन क्वेश्चन बड़ हेले सहज हो जाए एक्सप्लेनेशन सीट थाए क्वेश्चन जते छोटो हो जिवो कॉम्प्लेक्स हो जाए क्रिटिकल क्वेश्चंस in the context of inclusive growth trickle down theory means what is trickle down theory huh what is trickle down theory
ट्रिकल डाउन थ्योरी कौन assumes that growth automatically benefits the poor without targeted intervention, focuses only on export oriented industry, and discourages private investment, promotes excessive government control over the economy. ट्रिकल डाउन कौन कहूँ ये कहूँ लेट्स से ई रीजन टार डेवलपमेंट हम डेवलपमेंट है जो डेवलपमेंट अधिक हो ऑटोमेटिकली ए जगह डेवलप हो सारा पर पेरीफेरी गुड़ाक डेवलप हे नियर बाय एरिया गुड़ाक डेवलप हे मन कर तुम कर डेवलप करी भुवनेश्वर ना भुवनेश्वर डेवलप कल भुवनेश्वर डेवलप होला पर पेरीफेरी नियर बाय एरिया गुड़ाक कौन बोलता नियर बाय एरिया गुड़ाक डेवलप है कहले ट्रिकल डाउन थ्योरी है तले देख कौन हम आंसर एबे आंसर देख टी कौन हम वेरी गुड इवनिंग A is the answer, huh? Correct answer is A. Okay, very good. But you joined late. आज बहुत late रे join कलो वो ओडिया लिटिल लवर्स हमें बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कलो ने आज Which of the following is a major component of inclusive growth? High GDP growth rate alone, expansion of luxury goods and services, investment in health, education, social security, privatization of all public sector enterprises. मु रोसई टाइम रे क्लास करछि कौन करि परिबा ए टाइम ई स्लॉट ता ही अछि इकोनॉमिक्स पई लेट्स सी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल अछि in case you're not able to watch you can watch the recording. Major component of inclusive growth कौन हम investment in health education social security privatization expansion कौन हम C समझते देखो दिस इज द करेक्ट आंसर इज C इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एजुकेशन ना कहीं की हेल्थ एजुकेशन सोशल सिक्योरिटी ये सब गुड़ा कहते सोशल सेक्टर ऑल दीज आर कॉल्ड कौन कहते ये सब सोशल सेक्टर कहते एक्सपेंशन इंक्लूसिव ग्रोथ रिक्वायर्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक एक्सपेंशन but also human development through access to equality to quality health education social protection and all है next no frill account under financial inclusion is designed for no frill account is designed for no frill अर्थ कौन no luxury this is our अर्थ होती no luxury account मजा कह जाए BS बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स ओके नो प्रॉब्लम इट शोज योर क्यूरियोसिटी टू लर्न बहुत बढ़िया कि रोसे बेले भी क्लास करि परिबे ब्लूटूथ रे ये सब पॉइंट गुडा को निजर स्ट्रेंथ हिसाब रे नियंतु नॉट एज वीकनेस ना एते सब काम परे भी आफ्टर मैनेजिंग द हाउस होल्ड वर्क्स यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न so nothing is more important not valuable than this type of thinking तो यही जोश रहिले एग्जाम क्वालिफाई हो एति की कंसंट्रेशन एति की श्रद्धार आवश्यकता अछि शिक्षा प्रति श्रद्धावान लभते ज्ञानम
नो फ्रिल अकाउंट मीन्स बीएसबीडी अकाउंट बा जीरो अकाउंट जहाँ कह जाउछ एटा को मानको पई लो इनकम ग्रुप्स विथ मिनिमल बैलेंस रिक्वायरमेंट नाउ इधर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल overdraft facility also available. Next, which of the following is a correct statement about role of self-help groups in financial inclusion? Role of self-help groups in financial inclusion. SSGs are only meant for urban women. SSG promotes savings and provide access to microcredit through linkage with banks. SSGs are formal banks regulated by RBI. SSGs are not involved in financial inclusion. Which is a correct statement. SSG, they do promote savings, correct? They promote savings and they provide access to microcredit through linkage with banks. Self-help group, स्वयं सहायक गोष्ठी, मिशन शक्ति. The National Financial Inclusion Strategy (NFIS) in India, it is prepared by whom? Ministry of Finance, Reserve Bank of India, Niti Aayog, Ministry of Rural Development. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समस्त करिया चेष्टा करिवे. This is why, yes, all answer B. Yes, Reserve Bank of India is the correct answer. Next, which of the following is the key indicator used to measure financial inclusion? Which is a key indicator to measure financial inclusion? कौन हो? Number of ATMs per million population, per capita income of country, literacy rate, infant mortality rate. Number of ATM रू देखि परिवा, हंगे नहीं, number of ATM रू चेक करि परिवा, हला. The concept of inclusive growth is most likely to associated with which of the following? Concept of inclusive growth is most closely associated with classical economics, Keynesian economics, development economics, and monetarist economists. श्रद्धा सबुदिन क्लास होची नॉट लास्ट वीक भी तिला लाता लास्ट वीक ए वीक भी every week we are having a class. Kono, what is the correct answer?
development economics and human development approach. Which of the following is a major barriers to financial inclusion for women in India? Major barrier to financial inclusion for women in India. National income पढ़ी दबा उधर, don't worry. B, C, B, C. What answer होता है? Final answer is B. Social norms restricting mobility and ownership of assets. B is the correct answer. ताले बुझियला जति क्वेश्चन करिले आमे ना डाउट अछि तापर एबे कांसेप्ट आसीबे आ किछि जो जो क्वेश्चन कली से रिलेटेड किछि कांसेप्ट्स डिस्कस कर दवा सो दैट यू विल हैव क्लैरिटी ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक चाहूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट ये टॉपिक रु आसुथिबा कोनोसी भी क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस रे तार आंसर दियो हैला ठीक अछि किछि डाउट नाही बहुत बढ़िया नेक्स्ट आसीबा देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ कोन आमे देखले ग्रोथ होउची गोटे रिपोर्ट कहला इंडिया रे रिच मानकर नंबर बढ़ुची रिच मानकर नंबर बढ़ुची पोर मानकर नंबर कमुची सॉरी पोर मानकर नंबर भी बढ़ुची रिच नंबर बढ़ुची पोर मानकर नंबर बढ़ुची त माने एटी डिस्पैरिटी ता अधिक होनी ताले डिस्पैरिटी ता अधिक होनी लेट्स से दिस इज द पॉवर्टी लाइन बिलो बीपीएल कैटेगरी रखले एटा माने करो दिस इज द पॉवर्टी लाइन रिच माने ऊपर रहिले एटी आसिले पोर माने आउरी तळक तळक आसिले त ए गैप ता वाइडन होनी yes this gap widens which 84% is Indian 84% people तांका इनकम कमीची एवं बिलियनरीज मानक नंबर बढ़ी कोटिपति मानक नंबर बढ़ी whereas 84% population मानक नंबर मानकर इनकम रिड्यूस होइछ ताले मते कोन होची इनइक्वालिटी इंक्रीजेस और नॉट inequality increases or not yes है ना चलिए कहूँ सोशियो इकोनॉमिक inequalities disparities discriminations have been structural attributes of highly diversified and stratified Indian society. Philosophy of Indian constitution policies of government after independence has been increasingly focusing on social justice for upliftment of the marginalized section SC ST OBC minorities emanakar upliftment hout that is called inclusive growth. Inclusive growth is not simply a quantitative concept rather it is a qualitative concept which includes the marginalized section of society those who are not included under the concept of growth those who are not enjoying the fruits of growth. Inclusive growth is for them only. Inclusive growth is for them only. Inclusive growth semanang pai. बुझेला कौन inclusive growth? बुझेला ताले inclusive growth कौन कौन include करूची कौन देखुची देखुची everyone should be able to participate in the growth process
डिसीजन मेकिंग रे समस्त पार्टिसिपेट करिया दरकार ग्रोथ प्रोसेस रे समस्त पार्टिसिपेट करिया दरकार ग्रोथ रो फ्रूट रिजल्ट ऑफ ग्रोथ समस्त को मिलवा दरकार कोन को रिजल्ट ऑफ ग्रोथ शुड बी अवेलेबल रीचेबल टू एवरीवन what is the need for inclusive growth why is inclusive growth required why is inclusive growth required what is the need for inclusive growth रा आवश्यकता कोन भाई inclusive growth कहीं की दरकार जब ऑक्सफार्म रिपोर्ट देखिबा ऑक्सफार्म रिपोर्ट कहूची 84% इंडियन हाउसहोल्ड फेल नंबर ऑफ बिलियनरीज ग्रू जोटा कहली वर्तमान ऑक्सफार्म होची गोटे एनजीओ एटा गोटे आईएनजीओ इंटरनेशनल एनजीओ ऑक्सफार्म ये कहूची 2021 रे 84% ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड तांग इनकम कमीची बट बिलियनरी मानक नंबर बढ़ीची सो इट शोज इनइक्वालिटी यस और नो सो इट शोज इनइक्वालिटी इंक्रीज्ड कोन देखुची it shows how inequality increased inequality केमते बढ़ीची देखो ना this data is very important you can write or use it in mains now there are 70% of poor are from rural areas where there is a lack of basic social infrastructural services such as education healthcare electricity drinking water road communication ये सब vulnerable section जो माने women laborers scheduled caste groups tribal population religious minorities disabled persons they are lagging behind in job opportunities earnings hela now for regional disparity regional disparity कोन मु एग्जांपल दोची देखन रे अच्छा बीमारू स्टेट मानकर ना सुनि चंती को स्टेट बीमारू स्टेट की कहि परिबे बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश बुझे बीमारू स्टेट्स नो बीमारू स्टेट्स वर्सेस मु कहबी केरला और कर्नाटका और तमिलनाडु दीज आर डेवलप्ड स्टेट्स ताले एठी हमको रीजनल डिस्पैरिटी देखिया को मिलुची कि नै बा हमको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यू कैन टॉक अबाउट ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखंड एडा सब अंडर डेवलप्ड रीजन कोन कहली ये सब गुडा कहउचंती अंडर डेवलप्ड रीजन बुझिला मो कथा बुझिला तले मते कोइ रीजनल डिस्पैरिटी एग्जिस्ट और नॉट regional disparity exist or not हाँ मध्य प्रदेश इजी ट्रिक कौन दे मन रखे तो ऑलरेडी अच्छी ता फुल फॉर्म गुडा को लिखा रही बीआई स्टैंड्स फॉर बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश एटा को तो मन रखिया पई इजी ट्रिक होची बीमार ए स्टेट गुडा का नाम मन रखिया पई बुझु कि नहीं ओके so देखले देन इज फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड नाउ डेमोग्राफिक डिविडेंड कोन कोई जो मानकर बयस 15 रु 64 15 to 16 years जो मानकर एज कौन कहली 15 to 16 years जो मानकर एज से मानू कह जाउची कोन बुझिला सोनू कह जाउची 15 to 64 एज ब्रैकेट रे जो माने आछुचंदी तांको कहा गला यूथ माने लिखे ना माने यूथ
ताको जदि डेमोग्राफिक बा कहले डेमोग्राफिक डिविडेंड इफ दे आर नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली दे विल बी टर्न टू डेमोग्राफिक डिजास्टर दे विल बी टर्न टू डेमोग्राफिक डिजास्टर तो एटा को यूज करिया पड़ियो हमको प्रॉपर्ली देन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ मे मते निजे कहियो एते डिस्कशन परे मते कहंतु ओके सब टॉपिक रो ठीक अछि मते एबे कहंतु व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ को फैक्टर रहिले हमें कहबा कि इंक्लूसिव ग्रोथ इज देयर को फैक्टर रहिले हमें कहबा कि इंक्लूसिव ग्रोथ इज देयर को कोना सोशल पॉलिटिकल एजुकेशनल social inclusion no अर्थ what is the meaning of social inclusion what do you mean by social inclusion means समस्त included हेबे including everyone in the society नहीं then economic inclusion आ गोटे कोन कहली economic inclusion means economic inclusion no अर्थ इकोनॉमिक बेनिफिट समस्त पाखे पहुंच जो सेमी अर्बन एरिया है रूरल एरिया है ट्राइबल एरिया है इकोनॉमिक बेनिफिट से पहुंचा दरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचो कौन पहुंचो फाइनेंशियल सर्विसेज से पहुंचो समस्त पाखे हैला फाइनेंशियल सर्विसेज शुड बी रीचेबल टू ऑल डिजिटल इंक्लूजन it enables people's access to and use information and communication technology affordable cost रे समस्त पाखे आईसीटी पहुंचुथि environmental inclusion rampant exploitation of natural resources हैला तले एतिके बुझी हैला ना नहीं मते कोन
ताले मते गोटे जस्ट समरी कहतु व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ रे कोन बुझिलो जस्ट गोटे समरी को व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ कौन बुझिल कौन जल्दी जल्दी तब जीवा नेक्स्ट इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सरला कथा फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तले बे बुझे गला ना डाउट अछि यदि डाउट अछि मते पचार अच्छा बीमारू स्टेट रे के आसले टिके जस्ट रिवाइज कर दवा बीमारू स्टेट्स रे के आसले को स्टेट आसले व्हाट आर द स्टेट्स व्हिच कम अंडर बीमारू स्टेट बीमारू स्टेट रे के आसले एक्चुअली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे केतरा स्कीम अछि ता अंडर रे बिहार एमपी राजस्थान उत्तर प्रदेश ओके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंडर रे केतरा स्कीम अछि हाउ मेनी स्कीम्स आर देयर के कहबे you inclusive growth is economic growth that is distributed for uniformly across society okay मुद्रा योजना रे केतरा रहिला तीनटा कोन कोन कौन कौन शिशु किशोर तरुण है शिशु किशोर तरुण चाइल्ड टू वुमेन कौन तरुण हो now what are different components of inclusive growth को फैक्टर रहिला हमें कहबा कि inclusive growth होउची बोली what are different components of inclusive growth what are different components of inclusive growth को फैक्टर रहिला एठी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सब फैक्टर रहिला नुए तले कोन पढिले हम आज रो क्लास रे इंक्लूजन एमसीक्यू कले एवं तार थ्योरी पढले ठीक अछि चलो ऑलराइट देन दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन आउ जाती देखियो नेक्स्ट क्लास पढी के आसीबे समस्त थैंक यू गुड नाइट किछि क्वेश्चन एनी क्वेश्चन थैंक यू गुड नाइट